नारायणीयम् अध्याय 6 विराट देहस्य जगदात्म वर्णनम् वसन्ततिलका एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् मनवे नमः। जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे चोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिर्वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे त्वष्ट्रे नमः। ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते स्तविष्ठाय नमः। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दा चन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे स्थविराय ध्रुवाय नमः। निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वयुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्चरधना शमनश्च दंष्ट्राः अग्राह्याय नमः। मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वा जलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निर्देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः शाश्वताय नमः। पृष्टं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुर्व्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः कृष्णाय नमः। शोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते लोहिताक्षाय नमः। संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश रतर्दनाय नमः। ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् प्रभूताय नमः। इति 6th दशकं समाप्तम्। नारायण 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 नारायण।